पूरे देश में आज जिस प्रकार से नो क्वेश्चन आवर नो। माननीय सदस्य आपको आफ्टर क्वेश्चन आवर नो। अशोक कुमार रावत। माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर अशोक कुमार रावत नो। श्री टी सुमति आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज। आफ्टर क्वेश्चन आवर आफ्टर Sir, can I? Yes, please. Sir, I'd like to ask the Minister through you. The ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the Union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के एएनसी चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 एएनसी तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगी कि एनसीडी क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। धन्यवाद। प्रताप चंद सारंगी। Sir, whether consumption of crusher dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line, and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady? Sir, what steps have been taken to stop illegal crushers and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses, and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। श्री बेनी बेनन। Sir, the minister's reply is very good reply. I congratulate for the minister, and the government of India supporting free cost to dialysis service. Sir, in many countries, these kidney patients and other patients include in the disability list. Whether the government of India include the kidney patients and the heart patient in the disability list, so they will get so many other type of help, including their family members. सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायलिसिस सेंटर के तहत है। Can you provide them, include them in the disability list, so they will get another assistance? Yes. The financial assistance and other assistance to the family members also. सर, ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो सेवा दी जा रही है फॉर दैट किडनी पेशेंट के डायलिसिस के लिए, ये आज हमने लगभग 1000 सेंटर्स खुले हैं, जिसमें कि हमारे 7000 मशीन्स है। डायलिसिस सर्विसेज पेशेंट के लिए आज तक 13 लाख पेशेंट के लिए प्रोवाइड की है, और लगभग 137 लाख हीमोडायलिसिस के सेशन हुए हैं। सर, ये खास तौर पे बीपीएल के पेशेंट को हम
हमारी प्रायोरिटी है। और जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू यू सर कि दे कैन सेंड द प्रपोजल्स थ्रू PIP टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। धन्यवाद। जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में, इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की भी रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेटेड है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से कई डिसीज फैलते। बात सही है, हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले, इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है, जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं। बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 श्री तुरुना बुक्रार सर। Question number 322, sir. माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House. Sir, this harassment, chasing, killing, putting them in jail, it doesn't occur once in a way. So at least every month, 2-3 times, the Sri Lankan Navy is repeatedly harassing, doing a lot of atrocities against our Tamil fishermen. So last 3 years alone, in 2020, 74 fishermen were arrested and jailed. In 21, 143 fishermen were arrested. This year in 22, so far 88 people have been arrested. Even 2 days back, 2 days before, 16 fishermen from Rameswaram area have been arrested. Sir, fishermen from Nagapattinam, Kotepattinam, Jagadapattinam, Pamban, Rameswaram, the entire coastal area, repeatedly, yes sir, repeatedly they are arrested in jail. Question. Sir, their boats are damaged. Those days, earlier, few years back, they were warned, fishermen, sometimes if they cross the boundary, they are alert like that. But even if it is, some people cross the maritime boundary, they should be warned and sent back. Should not be fired and killed. And boats are damaged, nets are damaged. The catchment of fishes are carried away. So this should not happen, sir. Honorable member, ask question. Yes, sir. I want to know from the Honorable Minister. This should not happen again, sir. So what are the steps taken by the central government to stop these atrocities against Tamil fishermen?
Sir, the government of Modi ji has always been making efforts for the safety and security of Indians wherever they are. And Indians abroad, whether they are fishermen, whether they are students, whether they are laborers, their safety and security has been of utmost importance. Very recently, we brought back 22,500 students from Ukraine in the war-torn area. And let me, so this is not a fishermen of Tamil Nadu who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities. Government has been engaging with the Sri Lankan government, and every year, whatever the number that has been given, 74 were arrested, were taken into custody in 2020, 96 were taken into custody in 22, but barring the 16 who are still in custody, we have been able to bring back every Indian fisherman who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities, and Government of India continues to engage with the Sri Lankan authorities to bring back every Indian fisherman, including the 16 who are at present in the custody of the Sri Lankan authorities. Honorable member. Yes, sir. Sir, every time when our fishermen are arrested and jailed, we members from Tamil Nadu, every time we raise this issue, same reply every time you are giving. The sympathy alone will not resolve the problem, will not address the problem. So, what concrete step you have taken? It should be taken in the ministerial level. Either Prime Minister to Prime Minister, concerned Minister to Cabinet Minister there. Where mere sympathy of words will not resolve the problem, address the problem. Sir, two things I want to ask. Sir, the people who are arrested, jailed still, should be immediately released. You have to take steps for that, number one. Sir, number two, for the damn boats, more than 100 boats were seized, laying on the seashore of Sri Lanka, destroyed, action, damage. Okay. So compensation should be, sir, we should get the compensation from Sri Lankan government for Tamil Nadu fishermen. This Sir, should be immediately. This should be done. So every boat costs 50 lakhs, 1 crore. Please. Sir, I appreciate the concern of the honourable member, and through you. Let me complete. So the boat costs 50 lakhs, 1 crore. The poor fishermen, they pledges their houses, jewels, everything, and buy the boat, but they are not getting back. So the damage should be claimed. So what are the steps the government has taken so far? And I request the government to insist the Sri Lankan government to give compensation to our fishermen. Sir, through you, I would like to inform the member that, as I mentioned earlier in the first part of my reply, government has been taking it up at the highest level. A setup of 2+2, that is the foreign minister and the fisheries minister. A mechanism has been set up to deal with such issues. There is a joint working group at the level of the fisheries ministry, and I would like to inform the House through you, sir, that today the joint working group is meeting between India and Sri Lanka to discuss all such issues. I would also like to mention that our mission has been interacting with them, providing consular access, providing the legal assistance, their day-to-day needs. So Government of India gives utmost importance to every Indian across the world, wherever they are. Shri Vijay Basant. Thank you, Speaker, sir. Sir, I want to raise a question. I've come from Kanyakumari, which is a long coastal line, and a lot of people go for deep fishing. And I'm talking on behalf of all the MPs who represent the coastal area. Sir, people get caught every time, and it takes a long time to get them bailed out. And my request is,
what is the External Ministry should have a diplomatic agreements with the coastal countries so that the people don't suffer like this, because they are imposed for a huge fine and which the poor fishermen are not in a position to pay it. So I request the government to have the diplomatic agreements with all the coastal things, which will be helpful for the fishermen and not get stayed there and suffer a lot. Because our livelihood is dependent on the fishing, and they go for deep fishing and they cross the borders not unknowingly, and they get suffer a lot. So I need the government to take a call on it and have a diplomatic agreements with all the coastal countries, sir. Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member through you that this is not this is an issue which the government is very much concerned. It's not only about Sri Lanka. During the last week, 3 days ago, there was an incident where 61 fishermen were detained in Seychelles, 56 from Tamil Nadu, from Assam and from Kerala. The government and our mission in Seychelles moved so fast that 7th, the case came up in the Seychelles court, 22nd, they were let off, and they were repatriated back to India by the Air Force flight, Indian Air Force flight, on the same day. So this shows the concern and the seriousness in which the government of India under the Prime Minister approaches such issues. So I would also like to mention that government is in consultation, government is in discussion on issues related to Indian labor, whether they are fishermen, whether they are in some other jobs, to enter into agreements, understandings with various countries, and definitely I would say that this issue, it continues to be of serious concern and of utmost importance. Honourable Speaker, sir, we used to have a rapid response diplomatic channel to intervene in such issues of our fishers. Now, most of the time, Ministry of External Affairs is not considering this issue. Our poor fishers running court case in foreign countries their own. Whether the Ministry of External Affairs will initiate a permanent diplomatic channel to deal with this issue. Yes. I would like to inform the honourable member through you that his doubt that the Indian missions are not taking serious attention. I would like to clarify on that. Sir, every time such an issue comes up, Indian fishermen and their fishing boats are apprehended. Immediate steps are taken by the Indian missions. First, their confirmation of the detention, then provision of consular access, their early release and repatriation, along with fishing boats. And during the consular access, mission provides articles of daily use to the prisoners and inquire about their health. So the diplomatic mechanism, our missions are empowered to take up those diplomatic efforts, to see that the Indian fishermen who are apprehended by various other countries wherever they by mistake cross over the maritime borders, but every effort is made to bring them back, and for that all diplomatic efforts are undertaken. Question number 323, Diya Kumari ji. 23 आप सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहां पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं।
तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्य महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे भी जब इंसान बीमार होता है और पेशेंट बन जाता है तो उसके रिलेटिव की कंडीशन बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। तो जैसे नेशनल आयुष मिशन में क्या पार्ट है, तो पहले तो आदमी बीमार ही ना पड़े, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। माननीय मंत्री जी, आप तो ये जवाब दो, सिस्टम क्या है? क्या राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है? कैसे वेलनेस सेंटर, बता दो उनको। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव उनको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, उस स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है, उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे हैं, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के तरह कार्यात्मक है। माननीय मेंबर, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने जितने मांगे थे उनसे ज्यादा आपने आयुष वेलनेस सेंटर्स मेरे संसदीय क्षेत्र को दिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी 2 डिमांड्स और हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बोटाटी धाम है जहां पर पैरालिसिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी आते हैं, तो बोटाटी धाम में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाने का मैं एक आपसे एक निवेदन करती हूं कि वहां भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए और जेतारन में भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए, जो कि दोनों ही इस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा राजसमंद धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, यहाँ आयुष अस्पताल की आवश्यकता लंबे समय से है और मेरी ये मांग है, मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी ये एक मांग है कि वहां पर राजसमंद जिले में मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत 100 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बुटाटी धाम और जैतारण में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है और इसको हम एग्जामिन करेंगे। और साथ में ही जैसे हमारे साथी संसद महोदय ने अपने 100 बेड के आयुष हॉस्पिटल में डिमांड किया, लेकिन नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री की ओर से 50, 50, 30 या 10 बेडेड एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता का प्राविधान है और इस हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है। वैसे भी हमने राजस्थान में कुल 6 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, बीकानेर, सीकर और जयपुर में हमने ऑलरेडी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, in connection with the health and wellness center, sports Ayurvedic treatment having so much demand.
especially in Kerala. In my constituency, we are under preparation for start a sports Ayurvedic center there. Sir, my question is, in connection with the Health and Wellness Center under Ayush Ministry, whether the government may take initiative to start sports Ayurvedic treatment center. Good question. Very good question. Respected Speaker, sir, in reply to the question raised by Honourable Member, I could say that if the government of Kerala send a proposal through their annual action plan, then definitely this ministry will look into the matter. Question number 324, Sri Chandan Singh ji. Question number 324. माननीय मंत्री जी, सदन पटल पे रखा। Honorable member. अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है और उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, फिर भी उन्हें मतदान से वंचित रखा जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है? सर, वोटिंग का प्रोसेस इस देश में बिल्कुल साफ है और इलेक्शन कमीशन समय समय पे लोगों के सामने में भी इसका जागरूकता लाते रहते हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, एनकरेजमेंट दिया जाता है कि उसका वोटिंग हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति की वजह से उसका वोटिंग नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसको जबरदस्ती वोटिंग करने का, कंपल्सरी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वोटिंग करना सबका अधिकार है, लेकिन जबरन वोटिंग कराना ये कोई इस तरह का प्रावधान संविधान में भी नहीं है और इस पार्लियामेंट ने भी कोई चीज का पारित नहीं किया है। वो तो पूछ रहा है विचाराधीन कैदी को परमिशन है या नहीं। वही मैंने कहा कि अभी उसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि किसी कैदी को लेकर के, तो क्योंकि वोटिंग राइट पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सब देश का नागरिक का समान अधिकार है, इसलिए हम अलग से कैदी के लिए बात नहीं रख सकते। अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए
जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे और हमारे सरकार के सोच में है कि 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है, और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। राजीव रंजन सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया कि चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, जो मेरी समझ से तथ्यों से परे है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है, और वोटिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जब सेंसिटिव प्रश्न हो तो उस पर सेंसिटिव उत्तर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो सलाह आपकी। नहीं सर, ये देखिए जुडिशियल का जो प्रोविजन है, अगर कोर्ट से परमिशन लाते हैं, इस पे हम कैसे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए सारा नागरिक समान है, लेकिन अगर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इसको आप भी नहीं कह सकते। मैं लॉ मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका वोटिंग राइट सीज हो गया है। जो कोर्ट का अधीन में चले जाते हैं और जुडिशरी प्रोसेस में जब आ जाते हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आप चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? के मुरलीधरन before to the central government that the voting right should be given by the Pravasi Indians. Sir, in the state of Kerala, most of the Keralites are working in Gulf countries. In the election time, they are not in a position to come back and cast their vote. So I request the Honourable Minister whether the government should consider Pravasi voting right. Yes, sir, this is a very positive suggestion. And I have already told Election Commission also that we will make provisions and give us proper suggestions how we will allow our people who are staying outside and working to be given an opportunity to vote. And we are also thinking that online voting system, how it can be encouraged, how it can be done. But before declaring anything, before doing or making any declaration, we have to ensure the safety, the transparency, and also to protect it from any malpractices or misuse. मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है कंपल्सरी वोटिंग को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी से इत्तेफाक रखता हूं कि जबरन किसी से वोटिंग कराना उचित नहीं है। पर अगर आप देखें और पूरे देश में देखें तो जो इस देश के कथाकथित अमीर इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक रहता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले। तो इस सदन में अगर आप एक चर्चा कराएं कि किस तरह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। और मेरा सवाल मंत्री जी से एक है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल ये है मंत्री जी कि डज द सोर्स कोड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, does it vest in the Election Commission of India or does it vest in the companies which are manufacturing the EVMs? I want a specific answer to that. If you don't have it, ready, you can send it in writing. सर, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जरूर नोटिफिकेशन हम निकालते हैं। वैसे ही कंपनी अगर मशीन बनाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीन को? वो ईवीएम के इलेक्शन कमीशन का अधीन हो जाते हैं।
EVMs lie with the Election Commission, Mantri ji, or does it lie with the company which manufactures it? That's my specific question. सर वो मैं इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इन्फेरेंसेस भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है, नहीं क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं एक मिनट बैठो मंत्री जी, एक मिनट, आप भी बैठो। एक बात, मैं पूरे विश्व के कई देशों में गया हूं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और देश में 17 आम चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग करोड़ों लोगों का मतदान सिस्टम कराता है, ये कम से कम भारत के लोकतंत्र को विशेष रूप से बधाई देना चाहिए। इतना कोई सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करना मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर हो गया सर 325 सर, क्वेश्चन 325 सर। सर ये सबका प्रयास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसे बताया, पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है, तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the worldwide as one of the best system in terms of conducting the election. Question number. Yeah, Baloji. Sir, security effort. But don't try and dodge and evade the question. It's a very serious question which goes to the heart of our parliamentary democracy. Question, Baloji. And I would like to place those concerns on the floor of the House. Sir, security of our borders have become more vulnerable. This is very much evident by our experience in Ladakh and as well as Arunachal Pradesh. So in this context, the defense expenditure has to be increased multifold. And moreover, the defense expenditure as of now is, it is about 2 point, maybe correct, my stat is, so it is about 2.33 of GDP. I think it is very much correct. And moreover, the expenditure has to be enhanced in the area of modernization in purchasing sophisticated equipment so as to be used in the operational area for a successful combat experience. So now, when our government is going to increase the defense expenditure to the target of 3% of GDP. सर, माननीय, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि रक्षा का जो ट्रेंड है व्यय का, वो उत्साहजनक नहीं है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए ही अभी केंद्र के मंत्रालयों में सबसे अधिक व्यय बजट रक्षा मंत्रालय का है, सबसे अधिक है माननीय। 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था और आज दोबारा लेट मी से प्लीज, आज दोबारा 5.25 लाख करोड़, यानी कि 5,25,000। हाँ, 5 लाख, तो ये दुगना हो गया मान्यवर। तो कमी तो कहीं नहीं है। सर, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिपरी के बारे में सभी साथी हमारा जानते हैं। सिपरी ने 3 चीज इतनी अच्छी बोली हैं, मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिपरी हमको सर्टिफिकेट दे रही है, वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उनके अनुसार भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है जो रक्षा बजट में खर्च करता है मान्यवर। तीसरे नंबर पर हम हैं
और दूसरी बात ये कही है सिप्री ने कि भारत ने 211 से लेकर 2020 के बीच में 2020 के बीच में 76% अपना बजट बढ़ाया है। और ये भी मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मान्यवर कि 2011 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में केवल 9% बजट बढ़ा है। कहां हम 76 पर और दुनिया 9% पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि कहीं से कहीं तक कोई कमी इसमें नहीं है। तीसरा, सिप्री ने एक बात और कही है मान्यवर 2020 में कि भारत एक्सपोर्ट करने वाले देशों में 25 नंबर पर खड़ा हो गया। पहली बार जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से हम पहली बार खड़े हुए हैं मान्यवर। इसलिए कहीं से कहीं बजट कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बजट कम हो रहा है, टोटलिटी में तो हम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर कहीं पर लग रहा है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रिवाइज बजट लाते ही हैं। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट आता है, तो हमने अभी पिछले दिनों में कैसे मिला है, मैं 3 ही सालों का आंकड़ा बताता हूं मान्यवर। 2019-20 17,80,931 और फिर 2020-21 13,358.06 करोड़, 2021-22 24,06,887.92 करोड़। यानी कि अगर कहीं कमी भी होती है तो तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्रालय स्वीकृति देता है। कोई रुकावट ही नहीं है रक्षा के बजट में। जो हमको चाहिए, जितना चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए वो मान्यवर हम देते हैं। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। रक्षा मंत्री बालू जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछोगे पहले, रक्षा मंत्री जी पूरा जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी श्री अजय भट्ट जी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव एक रिप्लाई जैसी होनी चाहिए वैसी रिप्लाई इन्होंने की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर 2000 में एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो है बनाई गई थी और जिसने कि बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इस कमेटी में सेना के जो प्रेजेंट हमारे ऑफिशियल्स हैं वह मौजूद थे, यंग सर्विसमैन यह भी उसके मेंबर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, सारे लोग इस कमेटी के मेंबर थे। बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन्होंने यह विचार किया कि यह डिफेंस में बजट एलोकेशन जो होता है वह किस रूप में किया जाना चाहिए। उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि जीडीपी का सर्टेन रेशियो होना चाहिए, लेकिन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस कमेटी ने कहा कि डिफेंस के लिए जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की जरूरत नहीं है। यानी इस जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की रिकमेंडेशन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने नहीं की थी उस समय भी। और साथ ही यह कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह भी कहा था कि हमें यह देखना चाहिए कि डिफेंस पर हुए हर 1 रुपये का खर्च खर्च हुए हर रुपये पर कि हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। यह बात कारगिल रिव्यू कमेटी ने कही थी और इसके लिए हमें अपने खर्च को प्रायोरिटाइज करना होगा, फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करना होगा और डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी हमको लानी पड़ेगी। यह कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी और उस रिकमेंडेशन में जो कुछ भी कहा है कि फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी लाने की बात, वह सब हमारी गवर्नमेंट इस समय हमारा मंत्रालय कर रहा है। यार बालू जी। Sir, US is spending about 3.4% of GDP and Russia is spending about 3.9% of GDP, whereas India is only 2.33. When comparing to all the size of the countries, all the 3 countries, is it not necessary to increase the combating capability of our country to that level at least, on par with Russia and US? It's not necessary. So all these defense experts and analysts, they have definitely they have recommended the combating capability of India should be enhanced to that level. So that is why modernization and going for the sophisticated equipment, technologies are necessary. So the defense expenditure has to be increased. That is my contention, sir.
सर, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। देश की सीमाएं चाक चौबंद हैं और जैसा कि अभी लेह लद्दाख की बात आई थी कि कमजोर है, कहीं पर है, कहीं नहीं है। आज हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा उठा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक नहीं है। और सेना का आधुनिकीकरण हम कर ही रहे हैं। हमने 2013-14 से 22-23 तक इसमें किए जा रहे व्यय में 76% की बढ़ोतरी करी है। 76% की बढ़ोतरी कोई कम बढ़ोतरी नहीं है मान्यवर। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो दुनिया 9% खर्च कर रही है और हमने उसमें 76% खर्च किया है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। इसलिए कहीं से कहीं जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी है, लेकिन चिंता का निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने देन एंड देयर कहा गया है कि जो जैसे है जहां पर हैं वहां पर आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। गलवान आपने देख लिया है, कई घटनाएं आपने देख ली हैं, जो भी हमारी स्ट्राइक्स हुई हैं आपने उनको देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से हो कुछ और भी हो। तो इसलिए आज दुनिया हमारा लोहा मानती है और आप देख रहे हैं आज जगह जगह कहीं भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी की तरफ दुनिया की नजर जाती है। इसलिए कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। Thank you, sir. Sir, in the reply, there is talking about expenditure. The MOD and all our scientists have done wonderful work in the defense, especially our PSUs and the scientists. Especially BrahMos is one of the finest example which makes all of India proud, sir. I would just like to ask that during this tenure, there's a lot of discussion about strategic partnerships. And in Atmanirbhar Bharat, which is a wonderful scheme, I don't think anybody would object to it. A lot of Indian companies have shown a lot of interest in this strategic partnership. To give a small example is Baba Kalyani's company, which also has a big presence in my constituency. But somehow we still are depending on foreign partners and not on Indian indigenous production. So what more will government do to help such good strategic partners who are Atmanirbhar in India and are waiting for the honorable government and the ministry for orders? So if you could kindly say something and for encouragement. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, समझा दो आज। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो कैपिटल बजट है उसमें हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि उसका 68% जो है केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाएगा। यह फैसला हमारी सरकार ने किया है और जो रेस्ट अमाउंट जो बचता है उससे आवश्यकता पड़ी तो एक्सपोर्ट करेंगे। और लगभग 309 ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमने यह डिसीजन लिया है कि हम किसी भी सूरत में एक टाइम लिमिट निर्धारित की है। कुछ 24 के बाद, कुछ 25, 26, इसके बाद किसी भी सूरत में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत में ही पूरी तरह से इंडिजिनस तरीके से वह सब सारे आइटम्स तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 326 श्री गुमान सिंह दामोर। 326 जवाब सभा पटल पर रखा सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है। वे स्किल्ड हैं, परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में आज उन्होंने उठाया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है और उन्होंने
वो नहीं है। अच्छा, दो है ना, सॉरी। मैं क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया, सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया उसका बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय संसद ने जो सवाल की है ये सही है। जो भी हमारे हीलर्स है सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है इनको सही मान्यता देना चाहिए। ये मैं आपका साथ सहमत हूं और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने देर रात को भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं, तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपका पास सहमत हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियां हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियां बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है। अब बहुत परिवर्तन आया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियां हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे। श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मंत्री जी ने उत्तर दिया और दामोदर जी ने प्रश्न पूछा, सम्मिलित प्रश्न था, मैं इस प्रश्न के माध्यम से आयुर्वेद जगत की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद देते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसके पीछे मूल कारण है कि आज जो भी हमारी आयुर्वेद औषधियां हैं ये लगभग विलुप्त हो रही है और जंगलों के अंदर है। और अभी भी जानकारी में आ रहा है कि 85% इसका कलेक्शन टोटल जंगल से हो रहा है। और जिस तरह से मोदी जी की कल्पना है कि हम खेती को बढ़ावा दें, खेती को आय दुगनी करें, तो जितनी विलुप्त औषधियां हों उनका संरक्षण करने के लिए और औषधियों की सुनिश्चितता करने के लिए अभी हो ये रहा है कि हम जड़ी बूटियों को पैदा करने के लिए वन विभाग को हम के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जड़ी बूटियों की सुनिश्चितता के लिए और वनों पर ज्यादा आश्रित ना होते हुए इसकी पूरी सुनिश्चितता कराने के लिए ऐसी नीति बनाएं जिसके कारण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, किसान और हमारा आयुष विभाग मिल करके नीति बनाए और उत्पादन और मांग के आधार पर किसानों को जागृत करे, किसानों से डिमांड दे। और अभी सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि देश में औषधियां कितनी लग रही हैं। आज कोरोना के बाद लग रहा है कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, तो एक आंकड़ा भी देश के सामने आए
और कितनी मांग है और कितनी हम पूर्ति कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चितता करने का काम, एक पूल का काम विभाग करे, और ताकि किसान भी इसको पैदा करे और जंगल की औषधियां सुरक्षित रहे, और जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए विभाग सहायता देता आपने बताया है, पर 2021 के बाद देना नहीं बताया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आगे भी इस योजना को आगे लागू रखे, ताकि किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, सामान्य खेती से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अभी केवल वन विभाग देखता है, तो आप इसको लीड करते हुए करेंगे क्या, केवल माननीय मंत्री जी तक जाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हॉर्टिकल्चर विभाग की द्वारा इन विषय पर हम लोगों ने बढ़ावा दी है, और जैसे आपको भी मालूम है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ मेडिसिनल हार्बल का खेती किया जाता है और लोगों को इस विषय पर प्रसूचित किया जाता है, और नर्सरी हो, हर्बल गार्डन हो, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले दिनों में आपकी जो सवाल है, आपके मन में जो शंका है, ये आपने सही कहा है कि हमारे कुल मिलाकर देश के अंदर जितना भी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज है, इनका सही सूची प्रस्तुत होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि हमारे शक्ति को हमें खुद समझ में आए। तो मुझे लगता है कि अपने विभाग के द्वारा जो भी हम लोगों ने अब तक कदम उठाया है, कुल मिला के 242 यानी कि 242 हम ऐसे मेडिसिनल स्पीशीज को विशेष रूप से हमें आगे बढ़ाया है, जिसका आज मार्केट मोर देन 100 मेट्रिक टन का उसका वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगले दिनों में आपके सुझाव के मुताबिक हम निश्चित रूप से, अगर कहीं और भी करना बाकी है, इन चीजों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। राम्या हरिदास। Thank you, sir. Whether the government has any plan to open exclusive specialized Ayurvedic hospital and research center under Ayush Ministry, just like that aims in the state level. Thank you, sir. As you know, we have Center of Excellence in the sector of Ayush. Many important institutions, right from All India Institute of Ayurveda Sciences from Delhi to the different part of the country. But in the near future, growing the demanding situation, definitely will put a thought into it, and as per the proposal sent by the respective state government and in consultation with state government, definitely in the near future will examine your proposal. Thank you. Question number 327, Shri TRVS Ramesh. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 328। आओ, आप पूछना चाहते हैं? सर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में पूछूंगा। सर, दिसंबर महीने में आपकी अनुमति से कोविड पे यहाँ पे चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया और उस समय मैंने मंत्री जी से पूछा कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है, उस गैप को वो क्यों कम नहीं करते। उस समय कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन आज सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार इस नजर में सोच रही है। तो मेरी दोबारा मांग रहेगी कि ये सरकार आज मंत्री स्पष्ट करे, क्योंकि दिसंबर महीने में हमने जब चर्चा हुई उस समय पूछा बूस्टर डोज के बारे में, उस समय पूछा 18 साल से कम आयु के वैक्सीन के बारे में, पर मंत्री महोदय से उस समय कोई उत्तर नहीं आया और 2 हफ्ते बाद सरकार ने नीति निकाली। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पार्लियामेंट में ये सबके सामने स्पष्ट करे कि कोविशील्ड के जो पहले और दूसरे वैक्सीन पे जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए आप अपने सरकार की क्या नीति रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कभी जो भी इंफॉर्मेशन है और जब सदस्य ने पूछा है तो जो स्थिति है, ये स्थिति के अनुसार हमने रिप्लाई दिया है। वैक्सीन कब देना, किसको देना, कितनी आयु को देना, वो निर्णय साइंटिफिक होता है, हम नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी करते हैं। जब जब हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, उसके अनुसार हमने 18 एबव को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया था
उसके बाद कमेटी ने हमें रिकमेंडेड किया तो हमने 15 एबो को किया और आज 12 एबो देश के बच्चों को टीका लग रहा है और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर हम करेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्रीपद यसो नायक। The paper mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of business. आइटम नंबर 3 श्री एसपी सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ये जो एसपी सिंह बघेल के नाम पे क्रम संख्या 3 पर जो अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अजय भट्ट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भगवंत कुब्बा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। आइटम नंबर 6 डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। Honorable Speakers, with your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Bharti Pawar. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, Sri Manju Pradap Mahendra Bhai. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Item number 9, Sri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement showing further action taken by the government on the observations recommendations contained in the 7th report of the committee as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. Item number 10, Sri Ramesh Vidudi ji. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Savanand Sonwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay a statement correcting the reply to unanswered question number 657 answered on 4th February 2022 regarding Ayush colleges and institutions. Item number 12, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 28th March 2022, will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration passing of the Finance Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the Constitution's Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect to State of Tripura. Number 3, consideration and passing of the Constitution Scheduled Caste Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect of State of Jharkhand after it is passed by Rajya Sabha. Number 4, considerations and passing of the following bill after their introductions. Number 1, the Constitution's Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order, Second Amendment Bill 2022 with respect to State of Uttar Pradesh. Number 2, the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Number 3, the Indian Antarctica Bill 2022. Number 4, the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Thank you, sir. Item number 13, Sri Mansukh Mandavia ji. Sir, I rise to move that the pursuance of Section 17(2)(c) of the Surrogacy Regulation Act 2021, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as a member of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न ये कि मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री एन के प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, on the following grounds. Number one, the proposed amendment bill encroaches into the legislative powers of the Assembly of the National Capital Territory of the Delhi Legislative Assembly, which is against the federal principles of our Constitution. That is a basic feature of our Constitution, to have federal principles, and we are following always the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is always speaking about the cooperative federalism. Is it the cooperative federalism? Because Delhi Municipal Corporation Amendment Act was passed by the Union Territory Legislative Assembly of Delhi in the year 2011. And after that, that is trifurcating the municipal corporation into three. Now, the parliament is coming, the government of India, the central union government is coming with a legislation so as to unify the three municipal corporations which comes under the domain of the Legislative Assembly of Union Territory of Delhi. Sir, I do accept the fact that constitutionally the Union Territory is having the ample authority and power to legislate any matters which is in respect of the Union Territory. Absolutely, Union government is having the authority, but this is disrupting the Legislative Assembly. The will of the people is the Legislative Assembly. They have passed an act and it is in force trifurcation of the municipal corporations. Now Union government is coming with a legislation so as to unify it. Then what is the will of the people of the Delhi Legislative Assembly? That is why I am saying that it is totally against the basic feature of the Constitution. That is, sir, 1 second. Cooperative federalism. And the second objection is regarding clause 7(2) of the bill empowers the government to make rules of the employees of the corporation, but the bill lacks a memorandum delegating the legislation. But today morning I have received the copy of the memorandum of legislation, but it was not circulated along with the bill. That was a second objection, that is overruled. And the third objection is regarding the provisions of the amendment bill is complex drafting and it is not specific. In the legislative drafting, each and every provision should be specific. Sir, for example, clause 2 of the bill, if you see, it is being generalized, because wherever the grammatic sense of the definition is required, there the corporation will be named as Delhi. It is not specific, it is complex. These are the three objections by which I oppose the introduction of this bill. Thank you very much, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में बड़े पॉइंट्स रख रहा हूं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि 250 सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड्स आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। 2012 में ये एनडीएमसी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफर्केट हुआ था और इसलिए हुआ था ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इसी के आज विरोध में ये बिल जा रहा है। इस कारणों के लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं रूल्स 272 प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस के तहत मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में उठा हुआ हूं। मान्यवर, मैं दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के, एक 243U और pertaining to the terms of the municipal elections, और दूसरा आर्टिकल 246 pertaining to the legislative competence of the house, इन दोनों मुद्दे पर मैं यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के विरोध में खड़ा हुआ हूँ।
सर आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधिक कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके, ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। दूसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष जी, सर एक सेकंड सर, अरे सर माननीय सदस्य बिदुड़ी जी, सर एक सेकंड सर, माननीय सदस्य एक मिनट से आते हैं वो उधर का परिचय ना दे हमको। आप मुझे उधर का परिचय मत दीजिए, आप मुझे वहां का परिचय मत दीजिए। अध्यक्ष जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अपने कार्यशैली को थोड़ा सुधारिए बिदुड़ी जी। तो मैं आपसे इसीलिए बोल, उसका परिचय दीजिए, आप उसका परिचय दीजिए बिदुड़ी जी। हु आर यू? एक मिनट चलिए ठीक है, और तेज चिल्लाओ। आप अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं बिदुड़ी जी। सर एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। न तो आप बोल रहे हो जो रिकॉर्ड में जारी बस, ना आप बोल रहे हो। मैंने कल भी आप लोगों को आग्रह किया था, सदन की मर्यादाओं को ध्यान रखो। ये देश का सर्वोच्च उच्च सदन है। आप एक मिनट, आपस में चर्चा एक दूसरे से चर्चा कर नहीं करना चाहिए, आपस में डिबेट करना चाहिए। और जिस नियम के तहत मैं आपको इजाजत देता हूं वो नियम 72 भी पढ़ लेना चाहिए कि जब ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप डिबेट के अंदर जब बिल लाया जाए पूरी डिबेट पर चर्चा कर सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन अभी इस विषय पर मुझे पता है ना, कानून मैं पढ़ रहा हूं, इस पर इतना सा कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर आप विचार कर सकते हो कि ये अधिकार संसद का, सरकार का है या नहीं है, ये बिल ला सकती नहीं ला सकती, इस विषय पर कानूनन रूप से आप पक्ष रख सकते हो। हाँ, आर्टिकल 243U में तो बता ही दिया, और जो अभी आदरणीय प्रेमचंद्रन जी बोल रहे थे मैं उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। 2011 में सर ये जो है एनसीटी ने संबद्ध कर दिया ना मनीष तिवारी जी। सर 2011 में एक मेरी बात आ जाए। हाँ, 2011 में एनसीटी ने इन तीनों म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा था। ये अधिकार जो है दिल्ली विधानसभा का है कि वो इसको अब एक में जोड़ने का निर्णय ले या नहीं ले। जब ये हाउस उस अधिकार का हनन करती है तो कहीं ना कहीं हम देश के फेडरल सिस्टम के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपने मुझे इसका आप तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप तो शायद कानूनी बात करोगे। स्पीकर सर, बिल्कुल जो आपने आदेश दिया उसका पालन करेंगे। मिस्टर स्पीकर सर, I rise to oppose the introduction of this bill on grounds that this House does not have the legislative competence to enact this bill on the following grounds. Mr. Speaker, sir, if you read the statement of objects and reasons of this bill, it says in 2011, the said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to the trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Mr. Speaker, sir, the reason why this was done was because after Part 9A was inserted into the Constitution of India, with effect from 1st of June 1993, the power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Article 243P and 243R of the Constitution of India. Second, Mr. Speaker, sir, as per Article 246, read with 7th Schedule, Entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the states. Number 3, Mr. Speaker, sir, under the transaction of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs, Rule 8, read with Entry 1 of Schedule attached, local self-government institutions and
their functionings falls to the remit of the government of Delhi. Number 4, Mr. Speaker, sir, under the allocation of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs on the 1st of December 1993, entry 26 of those rules states that local self-government falls to the remit of the Department of Urban Development of the National Capital Territory Government of Delhi. In a sense, what I am trying to say, Mr. Speaker, sir, that if any house has the legislative competence in order to unify these 3 municipalities, it is the Delhi Assembly and it is not this House. And this House cannot, after Part 9 was inserted into the Constitution of India, substitute itself for the Assembly of Delhi and pass this particular legislation in an illegal manner. This is a very serious constitutional issue. It is a transgression on the basic structure. It's a transgression on the constitutional provisions, and therefore I oppose the introduction of this bill. Mr. Speaker, sir, thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रेमचंद्रन जी, गगोई जी, माननीय रितेश जी, माननीय मनीष तिवारी जी बोल रहे थे। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं से भी यह भारत के संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं है और नहीं किसी फेडरल स्टेट के अधिकार का अतिक्रमण है। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पास करें। और हुआ भी है, मैं पहले ही बताया कि अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत यह लाया गया है जो सदन को अधिकार है। प्रश्न है कि विधेयक को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी। सभा की क्या सहमति है? Speaker, sir, finance bill is the most important business as far as the budget is concerned. And passing of the finance bill on Friday, we know on afternoon Friday is private members' business. And it is taking away the private members' business, number one, and passing of such a finance bill having serious ramifications passing on Friday within a limited time, it is not fair because there are ample time. 31st March is there, 4 days are there. So kindly let the discussion begins today and let it be voting on Monday. That is our humble submission because it is a very serious physical matter that is to be concerned. Sir, BAC mein, it was decided in BAC that we will have the discussion today and complete it today, and if the members wish, then we can take the private member business in the next week anytime. Apart from next Friday, even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, anytime we can take that assurance from government side. We have already given it to you, sir. That is number one. Number two, on 1st of April, we want to introduce the finance bill and we want to implement and execute the budget. That's why we have requested even in the BAC
and your kind self had agreed, sir. And today we are requesting to dispose of to the next week. This today's private member business, we are requesting the postpone, not to cancel. Kindly cooperate. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य 377 के सभी मामले सभा पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। टी.एन. प्रतापन, मानिकम टेगोर, बेनी बैनन, सीताराम हरिदास, के सुरेश, नामा नागेश्वर राव। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। हाँ, गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। सर, the price of petrol and diesel were hiked for the third time in a week yesterday. We don't know how many more hikes await the people of India, and people of India have just returned from Omicron-induced lockdown. They want an environment where they can do their business, but all these price hikes have increased the cost of business, especially the price of transportation, and this will lead to inflation. Inflation is already at 7%, and commodities, all commodities will be increasing. So we want this government to give a reply as to why for 137 days they managed to keep the prices stable, and now after the elections are over, now they're increasing their prices. So we want, if the same policy, status quo to be maintained, if for 137 days they could keep the price stable, why can't they do it now when the country is reeling under inflation? They're just coming under COVID. I want the government to give a specific reply on this issue, sir. सर निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मेरे यहाँ जो है एक बड़ी दुर्घटना हो गई सर, रात में 2 बजे साहबगंज में जो गंगा नदी है हमारे संथाल परना में सर, वहाँ एक जहाज में 18 ट्रक डूब गए। और मैं आपको बताऊं, ये उठाने के पीछे रीजन ये है, संवेदना के पीछे सर, कि लगभग 100 लोग केवल मर ही नहीं गए, वो ट्रक इलीगल चल रहा है, वो जहाज इलीगल चल रहा है सर। और उस जहाज को चलाने के लिए नियम है कि सनसेट और सनराइज के बीच में जो है वो ट्रक नहीं चलेगा सर, वो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उस कंपनी के पार्टनर हैं, उनके जो पीए हैं उसकी दलाली कर रहे हैं, और इस कारण से सर ये इलीगल एक्टिविटी चलती है। जो बालू है, जो गिट्टी है, और जो लोग की हत्या हो रही है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि वहां चूंकि मुख्यमंत्री खुद रोजगार कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनकी सरकार को बर्खास्त करें और इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करें कि किस आधार पर ये 100 लोग मर गए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं सर, और गरीब की रक्षा करना इस संविधान का हक है, इस पार्लियामेंट का हक है। यही आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं। चटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। কিছুদিন আগে বীরভূমের রামপুরহাটে যে ধরনের ঘটনা, নৃশংস ঘটনা, নরকীয় ঘটনা হয়েছে, আজকে বীরভূমে 10-15 জন মহিলা এবং শিশুদেরকে ঘরে তালা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তারপরে গেছেন, গিয়ে টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন যাতে আসল সত্য বেরিয়ে না আসে। এবং আজকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে রাজ্যের যারা মানুষ যারা চেয়েছিলেন সিবিআই, সবাই সিবিআই চেয়েছিলেন, তারা সিবিআই আজকে হাইকোর্ট দিয়েছে। এবং আমি অনুরোধ করব যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেন এই সিবিআই কে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে, রাজ্য সরকারের মানুষের টাকা খরচা করে যেন সিবিআই নিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে। धन्यवाद জানাবো রাজ্য সরকারকে। मैं आपसे एक गुहार लगाना चाहती हूँ कि आपके चेयर के माध्यम से सर, इस सभागृह की सदस्य होने के नाते मैं न्याय की गुहार आपसे ही लगा सकती हूँ। सर संक्षिप्त में बात करें आपकी। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है, अगर एक सदस्य होने के नाते अगर हमारे साथ महाराष्ट्र में इस तरीके से अगर व्यवहार होता है, जब हमने किसानों के आंदोलन किए सर, किसानों के हित में आंदोलन किए, कोई क्राइम ना करते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल सर, क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है सर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें
कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर सर लास्ट सर 1 मिनट सर और सर 1 मिनट और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करके 307 का गुना उन पे लगाया। विधायक रवि राणा दिल्ली में रहने के बाद उन पे 307 गुना दाखिल किया सर। और 2 दिन पहले मैंने एक सीनियर कॉलीग को हमारी आरती सिंह के बारे में उसकी बाजू लेते हुए सुनाई दिया। सर 1 मिनट लास्ट उनकी तारीफ सुनाई दी। उनका कोई केस दिल्ली में आया है। अगर महिला की बाजू ले सकते तो ये भी एक महिला, ये सदस्य की एक सदस्य रहने के नाते मैं आपसे विनंती करती हूँ सर उन पे कार्रवाई की जाए। और ये पेन ड्राइव सर, ये पेन ड्राइव में उनके पूरे पुरावे हैं सर। ये फोटो है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे एक गाड़ी में बिठा के यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस लेके गया। उस करप्ट सीपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर। पूरे पुरावे नहीं सर। Honorable Education Minister through you, sir, the new Kendriya Vidyalaya in my constituency, Kottara, Kollam district, Government of Kerala has already transferred 5 acres land of Kendriya Vidyalaya Sangathan. The temporary accommodation has also been handed over to Kendriya Vidyalaya. The regional commissioner of Kendriya Vidyalaya has also inspected along with the central PWD officials. Every process is completed, but Government of India has not sanctioned the project. The people of my constituency are waiting for this Kendriya Vidyalaya last 10 years. I would like to request Honorable Minister through you, sir, whether this Kendriya Vidyalaya should be started immediately. Item number 16 with Videk 2022, Shri Gaurav Gogoi ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I am going to present my remarks on the finance bill, which is a money bill, and it has sections related to the direct tax, indirect tax. 1 second. Whatever honourable member she has raised the issue, we will bring it to the notice of the concerned ministry. Kindly let her take her seat. I am talking about her now. I request her to kindly cooperate. I will bring it to the notice of the concerned ministry. You are not responding. Why? एक मिनट मंत्री जी आप बोलना चाहती हैं कुछ? आप बोलना चाहती हैं कुछ? मूव कर दें आप। नहीं, he didn't call me for that. I started speaking. Sir, I move that the bill to give पहले की कार्रवाई को समाप्त कर दें, दोबारा से गौरव गोगोई जी को बुलाने की इजाजत देंगे। I was wondering, sir. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2022-23 be taken into consideration. माननीय सदस्य ने बैठा हुआ अब ठीक है ना, आपको थोड़ी पैरवी के लिए कहा है माननीय सदस्य की, नहीं गलत, आप सीनियर बनते ऐसे मत कीजिए। श्री गौरव गोगोई जी। Thank you, Speaker, sir. I rise to speak on the Finance Bill 2022, which is a money bill, and in it there are sections related to direct tax, indirect tax, custom duty, but before I raise this issue, so we must understand the context in which we are today. Today, because of repeated COVID-induced lockdowns, the country is recovering, but the recovery is unequal. The gap between the poor and the rich have only increased. The gap between the haves and the have-nots have increased. The government promised a V-shaped recovery, but instead we are seeing a K-shaped recovery. And this problem is extremely disappointing and is of extreme concern, because already we had seen that the inequality in this country is increasing. Now today, the top 10% earn 20 times more than the bottom 50%, while the top 10% and the top 1%
hold respectively 57% and 22% of the total national income. The bottom 50% share has gone down to 13%. Sir, there are enough examples in history. Yes, please, please. Honorable member, please. Sir, there are enough examples in world history where countries are experiencing record inflation, witnessing record unemployment, are seeing record that this government is giving to the people of India. There is record unemployment. Please. Don't worry. Our supreme leader is there. Please, Honorable. Prices are rising. Jingoism is the only antidote that this government is offering to the poor. Whether there is record unemployment, whether there is high inequality, whether there is inflation, people are expected to, and fair atmosphere, not always under the burden of high inflation and high fuel prices. And it is, sir, a bit ironic as to the answer that this government or its ecosystem or its spokespersons are giving on fuel prices. They are saying that the fuel prices are bound to happen. Why? Because there is a conflict in Ukraine. So I remember Prime Minister Modi ji speaking in Parliament on his during the last speech he made. And in that, sir, there was a point, and I was listening to him very carefully. He referred to Pandit Nehru. And he referred to Pandit Nehru, saying that, can you imagine that Pandit Nehru once blamed an international conflict happening in a different part of the world for the economic problems of India. And he smirked when he made that remark. Now today, what is happening? Now today, isn't Prime Minister Modi making the same argument that because of Ukraine, we have no choice but to increase the fuel prices? But the counter is, there are two counters, that if for 137 days, the Ukraine conflict did not happen last week or did not happen 3 days ago, the Ukraine, US, Russia, European conflict has been going on since December of Ukraine, since December. It's been more than a month since military escalation has happened. For 1 month, they could keep their prices stable. What has changed now? What has changed? That for one last month, since the beginning of the conflict, since the beginning of the Russian troops being on the border, to the beginning of the bombardment, to the Ukrainian refugees fleeing to different parts of Europe, that time you did not increase the prices. Why now? Just because elections are over. That's how you repay the people who put their faith on you. I congratulate you on their stupendous victory. But that doesn't mean that you take people's vote for granted. That doesn't mean that you get a remit to continuously put more and more burden on the poor, on the middle class, on the unemployed. So therefore, I feel that while we talk about the finance bill and the taxes, they're extremely important, we must talk about this context. Now, I don't want to be only critical of this government. There are certain measures in the finance bill which we welcome. Now, they have given a tax exemption for amounts related to COVID-19 and medical treatment. We welcome that. They have said that there's going to be illegal, they have identified under Section 37 that the IT Act allows for certain expenditure which is incurred for the purposes of business, except where the expenditure is incurred for purposes that qualifies as an offence or is prohibited by law. Now, in this finance bill, they have ensured that gifts and expenditure incurred on travel, hospitality and conferences, they will no longer be exempt. They will be taxed. And that's a welcome step that I feel the government is doing. There might be resistance from the pharmaceutical industry, but I hope that the government, in its sagacity, will manage to tackle with the pharmaceutical industry, because we all know, sir, there is a lot of examples in the world that how big pharma companies push certain procedures, push certain medicines through doctors, and in the end, the financial burden comes on the poor. So therefore, there's enough
evidence, and I welcome this step. At the same time, sir, there are certain steps which need more clarity. Now, on virtual digital assets, they have introduced a tax of 30%. At the same time, sir, while this measure is intended to disincentivize, discourage people trading or occupying or holding cryptocurrencies or NFTs, the government still is sending out mixed signals. And the government should send out a very clear signal. How are you going to define crypto? Is it an asset? Is it a currency? Is it something that can be speculative? We are waiting for the legislation and for the clarity to come. And why it is important for the clarity to come sooner rather than later? Because so many people in India are trading in cryptocurrencies. So many exchanges have been set up. And so normally when there is an IT technology-based change that takes place, we welcome it. And Indians are the first to welcome. Indians are the first to adopt it and innovate it and put an Indian context to it. And therefore, already there are record volumes of crypto-based transactions. Already a lot of young IT engineers are involved in this. But the government, while in putting a 30% tax, while they're coming out with further and further clarifications that it can't be offset, the losses cannot be offset. But I appeal to the government to have two approaches in mind. One approach should be that if you want to treat crypto as a sin and you want to have a high tax on it and you want to eventually ban it, then be specific and have that. But bear in mind that a lot of people would indulge in crypto and indulge in these operations in the dark net, and all of these operations will go underground. You are supporting cryptocurrency? No, I'm saying I'm asking the government to be clear, to have a clear approach. Clarity. Have clarity. Okay. And I'm asking for a policy to come out sooner rather than later. And secondly, I'm asking, sir, at the same time, I hope the government doesn't change its mind, because there are parts of this world, I'm just outlining the complexity of the issue. Because there are parts of the world, there are even countries which are adopted crypto as officially. Different countries have come out with regulations. Japan has one set of regulations. America has another set of regulations. So the government needs to have two approaches. One, if there is a ban, what is going to be your approach so that crypto doesn't become the route for money laundering or illicit activities or drugs or crime? B, if they do want to regulate it, then what are the lessons that we can learn from America and Japan from elsewhere? But that is, I rest it over here. But nonetheless, sir, point being, crypto is a risk at this moment, is a risk. And crypto is not the only risk that is in today's market. Sir, the stock market, sir, if you would see, over the last 2 years, especially during pandemic, there have been a lot of new investors in the stock market. Many say that while for people who were sitting in their homes for 2 years, as a way to occupy themselves, as a way to counter the low interest rates from banks, a lot of young people, a lot of people, middle-class people, a lot of women, elderly people have rushed into the stock market. Now, the stock market is not simple. It's complicated. It has its own rules. It has its own laws and principles. And the government must be concerned, because right now there are so many commercials on YouTube, people selling their advice and encouraging people to invest in the stock market. And there are a lot of new investors. Now, that could be another bubble. That could be another bubble that is waiting to burst. And therefore, I request the government to be also taken into account of this matter. I already mentioned inequality. I already mentioned crypto. I already mentioned the stock market. What is also happening, sir, that we are seeing that one of the aims of this government, and any government, is to widen the tax base.
We want more and more people to pay their taxes, and they have certain clarifications which have come. There are certain clarifications which have come on direct tax, on AOPs and other things. But what we are also seeing, sir, is an exodus of high net individuals. Now, we know that most of the income that comes under income tax comes from high net individuals. But what is happening, sir? We are seeing that since 2019, 7,000 high net worth individuals have left the country. A report says that $23,000 millionaires have left India between 2014 and 18. Now, we should be worried, sir. What is this ecosystem in India that is pushing some of our most highest earners, most productive people who are heads of big enterprises, the heads of big business? Why are they leaving the country? What is it in the ecosystem? Some have voiced that it is because of the fear that they feel. Some have voiced because it is of the unfair pressure that comes from various arms of this government. But I hope that this government seriously introspects, because that is not the reputation we want. We want that whoever you are, you might be a high net worth individual, you might be a salaried class, you will not be unduly harassed by the government. You will not be unduly pressurized by any extension of our government, and I hope that they would take into account. They would also take into account, sir, that now with Ukraine and inflation assumed to rise at 7%, various rating agencies are going to have brought down their growth outlook. So what is their plan now? The government should come up with a clear white paper as to how they manage to ensure that our fiscal fundamentals, our financial fundamentals remain stable. That clarity must come out. Because it seems that every month, because of certain external factors, our growth outlook keeps changing, and the government sometimes, I can say, is caught on its back foot. This government, in its taxation bill, this finance bill, has also got some sector-specific amendments. They've got amendments on handicrafts, apparel, leather, electronics. They've reduced the import duties for mobile phones. They've got import duties being reduced on certain chemicals such as sodium cyanide, methyl alcohol, acetic acid. They've also raised the customs duty on umbrellas to 20%, and they're also revising their anti-dumping duties on steel, considering the high cost of steel. So, just on steel, sir, because it's such an important sector, I do hope that the Honourable Finance Minister, in her reply, would specifically state that whether this anti-dumping duty which is being revoked, whether that's a temporary measure or it's a permanent measure. Because the prices of commodities, and especially that of steel, which are though nonetheless high, but at some point are likely to come down as well. But if you keep having an unpredictable flip-flop policy on commodity by commodity, that sends out a very wrong signal. Sir, gems and jewellery, the customs duty has also been reduced to 5%. And now on fuel, they want to encourage blended fuel, and therefore they are imposing an excise duty of 2 rupees per litre on unblended fuel. Now, sir, this is an important matter. I understand that by introducing blended fuel, they want to overall, they want to reduce their expenditure. But this is not the way to do it, sir. This kind of tax that you're doing, this kind of instrument, that if you want to encourage blended fuel, you will make unblended fuel. That does not work, sir. You have to create the ecosystem. Understand, talk to the OMCs, talk to the petrochemicals, talk to the retail outlets, talk to the pump outlets. There's a lot of resistance because the supply chain has to be set up. Remember, sir, what happened with GST. A hasty implementation, not taking into account the ecosystem, not orienting them, did more damage than benefit. And similarly, I advise this government, as they're pushing for blended fuel, I would ask this government to take back this excise duty of 2 rupees per litre on unblended fuel. Sir, this government has also brought out something on the SEZs, and I hope this government would give us more details on that. On GST, sir,
the position of our states is extremely doubtful and extremely vulnerable. They rely a lot on the GST compensation. And the timing of GST compensation has been extremely poor. It is completely at the hands of the central government. They release it when it suits them, but that does not suit the state government. State governments have to pay salaries, state governments have to fund their social welfare schemes, state governments have to put in money for development. Now, on this GST, they will say it's the GST Council. But, sir, I would request this government, there have been enough, both within and outside. State governments have continuously raised their views that the GST compensation is not released adequately, not released on time, and also, sir, under the Act, the tenure for GST compensation is coming to an end. So my request to this government is that you have extended the exemptions under this bill to startups. You have extended the exemptions given to companies for manufacturing by 1 more year. I would request this government to again extend the tenure for GST compensation and extend it by a year or not, or by 2 years, taking into account the GST Council. Yes, so, I'll come to an answer. I'll conclude shortly. There are some exemptions which have been come on the International Financial Services Center. The income of non-resident from offshore derivative instruments, income from over-the-counter derivatives. Frankly speaking, sir, the IFC, International Financial Services Center, seems to be like a white elephant. This government is trying to revive it, trying to push various things in order to make it alive. It's like giving those electric shocks to a patient that is already on its last breath and a patient that is already on the last leg. You have done since 2014 come out with so many initiatives to push the IFC. But what has happened? Nothing. So why didn't you take the right lesson from it and instead of pushing more initiatives, understand that there could be other locations in India that are much more suitable for International Financial Services Center. I am not asking you to shut it down, but I am asking you to think broadly and have an open mind. Think about the West, think about south of India, think about the East, whether it's Calcutta, Bombay, Bangalore, or if you even want to have it in the Northeast, which has such a long international boundary. Thank you. Be more broad in your outlook. So again, I don't want to always criticize this government. We must put on record things that they have done well and we appreciate. I've already talked about how COVID-related payments have been exempt. Yes. Again, they have come up with the insurance scheme payments for persons with disability. We welcome that. And, sir, there are 2 things I want specific if the minister could give us the details. So, on GST, sir, time has also come to evaluate the GST. And does the government have data that pre-GST, what was the volume of income they were collecting as part of indirect taxes? And compare that with the post-GST era, what is the volume of revenue collected from indirect taxes? Is it same? Has it decreased? And sadly, those entrusted with the decorum of this House, the garima, as they like to put it, smile smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this House and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines. Relief. Corporates have got a relief of 5%, and on the basis that they would invest more, they would put in more factories, they would employ more. Has that argument worked out? Do they have any study showing that more investment and more jobs have been created? Yes, Gogoji, please. So with that, sir, I don't want to take too much of your time. I've talked about direct tax, I've talked about indirect tax, corporate, GST, SEZ, the customs. So there are certain suggestions which have also come from chartered accounting, various agencies. I hope they will take into account. But at the same time, sir, let me go back to where I started from. Sir, fiscally, we are not in a good position. Our states are in debt. Our nation is in debt. Borrowings have increased. Most of the payments are going into borrowings. And this government is, through its policies, are pushing us further into debt. This is not a good sign.
already there are a lot of other vulnerabilities that I talked about, like crypto, like the new investors and less informed investors in the stock market. The debt and the fiscal position of our states is very important. States, I'm sorry to say, have no other option, but they're playing with excise-based income. They're either extending the wine liquor shops, the timings of wine liquor shops and opening from the beginning, or they are trying to increase their taxes. Because states, all the power of the states, the sovereign power of states to raise revenue has gone into the GST. So fiscally, sir, we are in a very bad position. Our hands are constrained. Time has come, sir, that this government, instead of using external factors to justify its moderate, conservative stance, uses the same risk to come up with a progressive and strong policy. That is what the UPA government has done on various occasions. When the 2008 global financial crisis hit, our growth did not take a hit like other countries did, and our employment was not as bad as it is now. Similarly, in 1991, come the moment of crisis, the government under our Finance Minister Dr. Manmohan Singh, Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and all the others came together to give a new outlook, an economic outlook, a new economic vision for our country, which has given us a new middle class and the economic muscle to call ourselves as an power, as an Asian power. Therefore, I request this government to emulate the UPA and use this moment of difficulty and crisis to have a bold vision and stop being cautious. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sri. Next, Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का, मंत्री भगवत कराड़ साहब का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जो हमारे मित्र गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उसकी चिंता की है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो देश दुनिया के हालात हैं, कोविड के कारण कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्री की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी के हालत। और चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है सभापति महोदय कि एक तरफ आपको इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे, लोगों को पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी, और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है वो इन चीजों से परेशान हो रहा था। और आज जिस तरह से ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसमें जो समस्याएं डेवलप हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, कैसे उद्योग धंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान किया जाए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का एक इतना बड़ा जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर परिवार इज्जत बचाना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार सृजन करते हैं। इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बनाकर ये फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र। सर, एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं, सर मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे। लेकिन हम क्या करें सर, क्या करें। आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो
तो हम क्या करें, हम पेपर लेकर आए सर। आज ये पेपर है सर जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई, 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहाँ टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा होगी, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री बी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे?
ये हालत थे सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए, हम जब आए तो 10% देने की बात किए, और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी 4 या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे, और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे, यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है। वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो गौरव जी? आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है। 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें? देंगे आप, एक दिन निकालिएगा आरटीआई से, कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा सर, दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संजोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, C&AG की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में C&AG की रिपोर्ट आई, और C&AG की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो,
चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और ज्यादा के ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं। और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया। लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना आरबीआई के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों? उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, और बिना आरबीआई के परमिशन के, सीएजी की रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है। तो एक बड़ी राहत दी है सर इस सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जिनके पास सीए नहीं है, या जो मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका अकाउंटिंग, उसको आपकी मंजूरी से यहाँ उठाना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। थैंक यू। श्री कृष्ण पाल जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के को देखना, और उसके ही माध्यम से सर्वेयर बनाए जाते हैं पूरे देश में। मान्यवर पढ़े लिखे लड़के, डिप्लोमा इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर परीक्षा देते हैं बाकायदा और सर्वेयर बनते हैं। लेकिन बीमा कंपनियां इस अथॉरिटी के साथ मिलके, IRDAI अथॉरिटी के साथ मिलके अपने हिसाब से सर्वेयर नियुक्त कराती हैं, किसी को 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए देकर, और उन्हीं सर्वेयर के माध्यम से जो बीमा धारक होते हैं, जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा होता है कि उनको सही पैसा, सही कीमत नुकसान होने पर मिलेगा, फर्जी तरीके से सर्वे कराते हैं और मनमाने ढंग से उनको दौड़ा के बड़ी मुश्किल से जो उनका क्लेम होता है वो मिल पाता है। ये एक बड़ी चीटिंग का मामला है सर, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा का मामला है, खासतौर से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जो बीमा धारक जुड़े हुए हैं उनका। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, पहली बात, 9000 सर्वेयर इस देश में हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी आपने परीक्षा ली है, अथॉरिटी ने आपकी परीक्षा ली है और उनको नियुक्त किया है। उन सर्वेयरों के हित की भी रक्षा कीजिए, उनके लिए एक वेज तय कीजिए, एक रेट तय कीजिए कि कौन सा सर्वे करने पे उनको कितना निर्धारित पैसा कंपनियां देंगी। और दूसरी बात, सर्वेक्षण जो हो उस सही सर्वेक्षण के हिसाब से ही बीमा धारक को उनका पैसा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। श्रीमती मौसम नूर जी। Giving me an opportunity to raise this important issue. The issue which needs to be addressed by the government is the data leakage of minor girls and also women. Sir, in Udupi, Karnataka, amidst the hijab ban controversy, personal data of at least 6 girl students have been leaked and shared across social media, out of which most of them are minors. Their personal information like name, address, etc. have been shared by multiple people, thereby violating their privacy. Such data leakages and violations are not uncommon. Limit in drinking water source. This, sir, Pune has 800 colleges
where students come from various parts of the country, north, south, east to west, and also from various other countries to these colleges. Sir, we cannot forget the stellar role played by Pune when COVID struck us, because the first few samples of the COVID happened to come to Pune to the NIV lab, which was the only lab then. So also, when the vaccine rollout started, again it was Serum Institute of India which really played a great role in the vaccinations all over the country. Sir, Pune, which has come a long way from a pensioner's paradise to a young and vibrant city, unfortunately still operates its flights from the Indian Air Force Station at Lohegao, which has a design capacity to handle only 1.5 million passengers per year. So in the year 2019-20, the passenger traffic showed an exponential growth touching 8.5 million, and it is projected that by the year 2025, it would reach 18 million. Under these circumstances, sir, it is evident that we need urgent need to have a new greenfield airport at Pune to meet the traffic demands of both the passengers and the cargo. Our leader, Shri Honorable Sharad Pawar ji, has been constantly following it up with the Ministry of Defence and Ministry of Civil Aviation. Unfortunately, this project still waits clearance. So it is I urge through you, sir, that our brief gets fast forwarded with the government, because this will not just serve the interests of Punekars, but also in the long run the economic situation of our country. Thank you, sir. धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। Sir, thank you very much for giving me this opportunity. My subject is about the misuse of antibiotics. Sir, in the last few decades, there has been a huge increase in diseases caused by bacterial infection. श्रीमती जया बच्चन जी। Thank you, sir. Sir, I want to speak about the arsenic contamination of groundwater. Water is the essence of life, and providing clean and safe drinking water is the right of every citizen of this country. 78% of the population in India depends on groundwater for irrigation, drinking, cooking, domestic uses. These numbers increase as we move towards the rural areas of the country, where the primary source of water is groundwater. According to the government data, India is placed second in the world in terms of arsenic contamination in groundwater, and third highest in terms of deaths or diseases occurred due to this arsenic poisoning. Sir, we are talking about Ghar Ghar Jal. The minister, in his reply the other day on Star Question 187, has mentioned, and I quote, out of 1,657 rural habitations with arsenic contamination beyond permissible limit in drinking water source, community water purification plants have been installed in 418 habitations. This is less than 50% of the rural habitations, sir. I would like, through you, bring to the notice of this House, the state that I come from, Uttar Pradesh, has arsenic contamination 50 times more than any other state, and this directly affects 2.34 crore people of my state. According to the report presented by Health and Family Welfare Minister, it is mentioned that prolonged arsenic poisoning can lead to many problems like skin lesions, skin cancer, bladder, lungs, and cardiovascular diseases, as well as reduced intellectual functioning in children. Yet no concrete steps have been taken to deal with arsenic contamination. Sir, I have a few suggestions, if I may. Using iron and aluminium salts, which are easily available on the counter, is a good way.
to rectify this problem. Using activated alumina, activated carbon, and activated bauxite is again a very good solution, and cheap. Installation of water purification plants in every district is a must. My suggestion is to frame a national policy to deal with arsenic contamination and to start awareness programs, sir. We are advertising for a lot of our achievements, but this needs to be advertised more. And, sir, to educate the people also. माननीय जिया जी समय खत्म. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू. माननीय सदस्य जो भी एसोसिएट करना चाहते हैं कृपया अपने नाम फिल करके यहाँ भेज दें, प्लीज. माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी. Thank you, Chairman, sir. The ambiguity and the constant changes in the examination pattern of CBSE has created lot many issues to the students. The CBSE Class 12 of Term 1 exam result has been released and now available at the schools. This has created pain to many of the students and their family members. I think Honorable Minister and the government know about the complaints which they received at the time of Term 1 examination, and Minister himself set up a committee to go through the question paper setting process, and I think something will come out from that. Now the situation is the constant changes in the evaluation process also creating hardship to the students. Therefore, even though there is a problem with the COVID situations, the CBSE side also some little bit issues are there. For example, the latest case of negligence in CBSE releasing Term 1 results in the middle of Term 2 examination. Can you imagine, sir? Now the students are ready for Term 2 examination. This time is examination of Term 1 is releasing. Examination was conducted in November, 4 months before. That too through an online objective type examination. Everybody expected that an early result could have come, but the results come later than the offline examination system, general procedure system. This is this has created lot many issues. As of now, where students are preparing Term 2 final examination, the Term 1 result is published. This is also creating mental agony for the students who are going to approach the Term 2 examination. As of now, the specific weightage of the two sets of marks also not been declared. In the last circular issued on 9th March, it is said that the weightage of Term 1 and Term 2 will be decided at the time of declaration of Term 2 results. This also put mental pressure on students who are going to write the examination on Term 2. I would urge the government to instruct CBSE to clarify the specific weightage of the two of mark of the earliest. I also urge the government to see through the demands of the students in this regard. Thank you, Chairman. Thank you. Dr. Amar Patnaik ji. Thank you, sir. Sir, who can forget the remorseful picture of a 1-year-old putting a blanket over his dead mother in a far away railway platform in Bihar during the first wave of the pandemic. So COVID left many children completely or partially orphaned. So the figures differ. The Lancet Child and Adolescent Health has estimated that 19 lakh children were orphaned, lost either or both the parents between March 2020 and October 2021. However, the Ministry of Women and Child Development said that these figures have no correlation with ground reality. So, but our own National Commission for Protection of Child Rights, the NCPCR, has estimated it to be 1,47,492. Out of which 10,000 lost both the parents. But the reply given by the ministry to a start question says that until now, they have registered only 4,301. To the export ships and grow the relations with India. उसके कारण कंटेनर्स भी ब्लॉक्ड हैं, सैंक्शंस होने के कारण भी शिपिंग इंडस्ट्री पे प्रभाव पड़ा है और उसका पूरे विश्व भर में जो आयात निर्यात होता है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उस पे शिपिंग कॉस्ट भी बढ़े हैं, अवेलेबिलिटी भी घटी है और एक संकट तो अवश्य इस विषय में है। कोविड का संकट अपने तरह
ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और ये अब इसके ऊपर एक और संकट ऐड हो गया। ऐसी परिस्थिति में सरकार, ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इसको अधिकांश विश्व भर में चलाती है। सरकार निरंतर डायलॉग बनाए हुए है अलग अलग शिपिंग कंपनीज, उनके एजेंट्स जो कंटेनर्स सप्लाई करते हैं सभी के साथ। और अभी तक का आप सब जानते हैं, परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को उजागर किया देश और विश्व के सामने कि भारत ने इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद $400 बिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट, जो ऐतिहासिक है, भारत ने कभी इतना नहीं किया था। ये पहली बार इस वर्ष किया है। जब तक महीना खत्म होगा 400 से भी अधिक हो जाएगा। तो परिस्थितियों पे सरकार की निगरानी भी पूरी तरीके से है और सरकार जो भी कदम उठा सकती है इस विषय में लगातार संपर्क बना के कर रही है। निर्यातकों के साथ भी चर्चा निरंतर चलती है और जितना संभव हो सकता है उस पर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। ऑनरेबल पी विल्सन। Sir, the petrol prices has been hiked. Is it due to the sanction imposed on Russia? And what are the measures you have undertaken for the persons who have left their business and jobs from Ukraine and who have come here back to India? You have taken any remedial measures or any rehabilitation programs have been done for them? Yes. The second relates to health ministry because largely the students of medical colleges. In terms of the business people, we have not yet got any business person who has approached our ministry telling us that his business is dislocated because of this current situation between Russia and Ukraine. If the honourable member has any such instance, we would like to get the details. But ultimately, the business being done in a foreign land is an independent activity. Government is not a part of that business and will not be able to really interfere or intervene in that matter. In terms of other facilitation for our importers or exporters, government is in dialogue with all those who are impacted by this situation, and various measures are being taken to ensure that payments come on time, ensure that businesses do not suffer. Thank you. Question number 243, Mani KJ Alphonse. Mani Mantri ji. A statement is laid on the table. First supplementary. Sir, while the nation is extremely proud of India crossing the 400 mark in exports, which I think for which every Indian should be very proud of, sir, what is the role of the MSME sector in achieving this historic? Are we looking at sending our wheat in the international market and also alternate transit routes due to the problems on the high seas, whether through the land corridors, through the Central Asian countries, so that we can continue with our trade? Thank you. Through you, sir, I'd like to thank the Honourable former Commerce and Industry Minister for his very, very gracious comments. And truly, our exporters deserve it. Our exporters deserve accolades for what they have been able to achieve in these very difficult times. The second wave was so difficult, then we had Omicron, and then towards the last quarter we had the uncertainties around the emerging or the current situation in Ukraine and Russia. In this situation, Deputy Chairman, sir, all the members will be happy to know that we have been continuously monitoring the opportunities this opens up for India and Indian exporters. I still recall, it was over a month ago, month and a half probably, that I got a call from the Honourable Prime Minister asking me what steps are being taken for example, wheat exports. Wheat is something where I'd like to share with the Honourable members through you, sir. India can proudly say that we have very high quality wheat and our farmers are truly making the country proud with the growth in wheat production. And similarly, our exporters over the last 2 years grew wheat export from merely 2 lakh metric ton 2 years ago. Last year, they grew it 10 times to 21 lakh metric ton. And in the current year,
we'll close with over 70 lakh metric tons of wheat export. But as is the way of working of Prime Minister Modi, he has set an even much more aggressive target for all of us to work with. Honorable Agriculture Minister is here. We have been having joint consultations. The Railways is rising to the occasion by ensuring availability of adequate rakes so that wheat can be moved to the port. The Shipping Ministry is also working to ensure seamless movement of agricultural products, particularly wheat, given the current situation where the opportunity, because Ukraine and Russia were large exporters of wheat, is pretty large all over the country. So A, we are working on the track of increasing our wheat exports to the current importers. B, agriculture is in dialogue with various countries for the process to be speeded up and expedited so that newer markets for wheat can be sought. And I'm happy to share with you that after I gave my entire report to the Honorable Prime Minister, take that Honorable Minister, in a catch-22 mode. And I believe very clearly that you are doing enough. But whereas there could be a point where there could be a conflict or contradiction between our trade and commerce priority and our diplomatic and political position, which has been shaped through all these conflicts in last since 47. Has the government been thinking about it? What could be the alternative or diversification through all that? Thank you, sir. Jahan tak strategic, as regards the strategic issues, I think that would be more for my colleague, the Honorable External Affairs Minister, to address that at the appropriate time, because right now we are in सामान्य रहा है उस राज्य ने मेरे यहाँ microbial fats and oil and their textiles. The knowledge of the proper means. Government should in Sakal. Honorable, yes, yeah, please. Thank you, sir. Sir, Trinamool Congress. निशिकांत दुबे जी उनका स्पीच स्टार्ट किया ये बता के जो उनको पता है ऑपोजिशन क्या कहेंगे, ऑपोजिशन को भी पता है वो क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार कितने अच्छे हैं और कांग्रेस कितने खराब है. एनीवे, फाइनेंस बिल 2020-22, every year the central government introduces the finance bill along with the other documents of the union budget. The finance bill is brought to seek the legislator approval for giving effect to the various tax proposals, including direct and indirect taxes of the central government. This note discusses the key provision that the part of the finance bill 2022. Main tax proposal in the finance bill. Relation of the surcharges. The budget noted that there are several works contracts that require the formation of a consortium. The member is such consortium that usually companies such of association of persons are object to the graded surcharge of up to 37% on their income. Note that the surcharge on domestic companies with income between 1 crore rupees and rupees 10 crores is 7%, while for those while income above rupees 10 crores in 12%. The budget proposal to cap the surcharge levied on the income of consortium or association of persons are 15% also. The long-term capital gains tax on instant equity shares is subject to the maximum surcharge of 15%. However, other long-term capital gains tax is subjected to the graded surcharge up to 37%. It has been proposed to cap the surcharge on long-term capital gains from transfer of any type of asset at 15%. Next, facilitate surcharge disinvestment of public sector company.
According to Section 79, the Income Tax Act 1961, in case of change of shareholder of the companies is the previous year, any loss incurred period to the previous year cannot be set off against the income of the previous year. This is applicable for companies where the public does not have a substantial interest. The Finance Bill 2022 seeks to amend the Income Tax Act to provide that Section 79 will not apply to the public sector company. However, the holding company of the Arsville public sector company must continue to hold at least 51% of the voting power immediately after the strategic investment. Tax on virtual digital assets. Virtual digital assets have gained popularity and the volume of trading in such assets has substantially increased. In addition, a market is developing where payment for transformation with virtual digital asset can be made through another such assets. The finance will propose to tax any income from transfer or virtual digital asset at 30%. No deduction related to any expenditure or allowance for or set off or any loss will be permitted while computing the income from transfer of such assets. Moreover, any loss from transfer or virtual digital asset will not be allowed to set off against income order. Any other provisions of the Act, Income Tax Act, such losses will also not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years. The proposed amendment will come into effect from April 1st, 2023. Note that the central government has circulated certain amendments to the finance bill. Proposed amendment dropped the word other from any other provisions. Regarding setting of laws at state above. This may imply that the loss from virtual digital assets cannot be set against gains in such asset as well. Next, filling up of update returns. Taxpayer will be permitted to file any update return of income within 2 years of the assessment year. They will have to pay 25% penalty on tax and interest due if it is filed in the year after the assessment year and 50% penalty in the second year. Cooperative societies. The cooperative societies have to pay minimum tax at 18.5% rate. Note that the Taxation Laws Act 2019 reduced the minimum allotted tax rate payable by compensation at 15% to provide parity between cooperative societies and companies. It has been proposed to reduce the AMT rate at which cooperative societies pay income tax 15%. This amendment will be applicable from April 1, 2023. Change in customs duty. The finance bill also proposed to change the customs duty on the number of items. Example, microbial fats and oil and their fractants. Current customs duty 30%, new custom duty 100%. Umbrellas 10%, new 20%. Imitation jewelry 20% current, new 20% and rupees 40 kg for 400 kgs, whichever is higher. Single or multiply loudspeaker 15%, now 20%. Headphones and earphones 15% to 20%. Earphones, smart meters 15% to 25%. Solar cellars 20% to 25%. Solar modulars 20% to 40%. Non-tax proposal in the finance bill. Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India Act 1934 is being amendment to enable RBI in issues its digital currency. मैं सिर्फ ये बोल के खत्म करना चाहती हूँ क्या अमेंडमेंट होता है क्या बिल आते हैं क्या फाइनेंस बिल देश के बहुत सारे गरीबों के कुछ नहीं पता उनको पता करना भी नहीं है पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है सिर्फ उनका यही क्वेश्चन है पेट्रोल डीजल
और जो हम लोग का गैस सिलेंडर वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, सिर्फ कब का ही आंसर उनको चाहिए। ये डिस्कशन ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ इसका मतलब नहीं है, कुछ उनको लेना देना नहीं है। सर सिर्फ ये पूछना है मिनिस्टर से, जो भी दोष कांग्रेस को दो या बीजेपी कितना अच्छा करे उसमें हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को भी यही क्वेश्चन है, कब ये कम होगा, कब कब कब। थैंक यू। Honorable Member Sri Jaydev Galla ji. Thank you, sir. Sir, we have reached the last leg of the process of the Union Budget 2022-23, and I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill. Sir, there's a perceptible change in the global economic scenario since the presentation of the budget due to the Russia-Ukraine armed conflict, and India cannot insulate itself from these developments, and hence we have to relook at the budget proposals, recalibrate our forecasts, and the House won't get a better opportunity than the Finance Bill to discuss these, sir. Sir, before I start making my submissions, I would like to compliment the Honourable Finance Minister and the Honourable Minister of Commerce and Industry and the government for showing outstanding performance and growth in our exports in this financial year. Sir, we have touched for the first time ever exports worth $400 billion in this financial year when compared with $292 billion in the previous year. So I take this opportunity to compliment the government for this achievement, sir. In view of the paucity of time, let me start with the issues related to my state, sir. Sir, my first point is regarding the capital city of Amaravati, which falls in my parliamentary constituency. Nobody can dispute that it is the prerogative of the Assembly to make laws, but at the same time, it is not just the Assembly, but not even the Parliament cannot make laws which violate the Constitution, sir, because the Constitution is supreme and not the legislature. So since the Honourable High Court has also made it clear that Amaravati will remain the capital of AP, I urge the Honourable Prime Minister, who committed to the farmers of Amaravati and to the people of AP the central government's support to develop Amaravati as a world-class city, to bring amendment to the AP Reorganization Act and to insert a provision indicating that Amaravati is and will remain the only capital of Andhra Pradesh. The next point, that I am greatly disappointed that the Honourable Finance Minister has not allocated much for the development of Amaravati, sir. I understand that only a few lakhs have been given by the Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry. Sir, it is pertinent to mention here that the High Court of AP has directed the government of AP to construct and develop Amaravati capital city and the capital region as per the approved master plan, and within 6 months as agreed under the AP CRDA Act. Since the government of AP's coffers have become empty and it is not I request the Finance Minister to explain how we would